Hello, hello. Yes. Sorry for interruption. There is some network issue. Okay. Okay. Hello, is it visible now? Hello, Yes, sir. hello. Yes, sir, it is visible. Okay, sorry. Actually, Yes, sir. there is Kumbh in Haridwar. I I hope you are aware about it. So due to Kumbh, some issues in the networking connections. So let's start. Sorry for the delay. So first, I'd like to introduce myself. Myself, Swapnil Bhardwaj, working as quality manager in ITC Limited. This is your second class. In this class, we will address the basic requirement of food safety and others. So let's start with what is food safety and what is its requirement. Food safety means the safe food we can eat. What is the basic requirement and what is the guidelines? As per FSSA 2006 definition of food safety means assurance that food is acceptable for human consumption according to intended use. So, Hindi, all of you are comfortable in Hindi or English? Hello? Yeah, Hindi is fine. Okay, no issue. Uh, Anything, sir. and आई थिंक आप लोग अवेयर हो गए फूड सेफ्टी और ये सब जो टर्म्स ये स्टार्टिंग हुई थी स्टार्टिंग हमारी तब हुई थी जब नासा में फर्स्ट टाइम जब हम एस्ट्रोनट्स को भेजते थे तो फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि फूड पॉइजनिंग वो लोग खाएंगे क्या तो उन लोगों ने स्टार्ट किया कि एटलीस्ट जो हम वहाँ पे जो एस्ट्रोनट्स जा रहे हैं अंतरिक्ष में उनको फूड्स क्वालिटी की प्रोवाइड की जाए ताकि वो बीमार न पड़े फूड पॉइजनिंग ना हो क्योंकि इतने दिन तक कोई भी फूड सर्वाइव नहीं कर पाएगी so that from there it comes the good manufacturing practices and now it is a big venture और काफी चीजें उसमें इंक्लूड हो गई हैं तो एज पर फूड सेफ्टी जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे खाने के लिए फिट है या नहीं तो देयर आर सम डेफिनेशन फर्स्ट इज फूड सेफ्टी इट इज ऑन योर स्क्रीन नेक्स्ट इन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फूड सेफ्टी तो हमें समझ में आएगा कि जो भी हम खाना खा रहे हैं पैकेज फूड वो सेफ होना चाहिए बट वो होगा कैसे इसके लिए हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग आपको प्रॉपर जीएमपी फॉलो करनी पड़ेगी हाइजीन प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके लिए हैजार्ड एनालिसिस होना चाहिए और जो भी क्रिटिकल कंट्रोल और जो हैजार्ड्स जहाँ पे स्कोप है उन चीजों को आप कंट्रोल कैसे करोगे उसके लिए आपके पास क्या कंट्रोल पॉइंट्स हैं ये सारी चीजें इंक्लूड करके ओवरऑल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में आती हैं and this is the basic understanding of what is FSMS as per FSSI. FSS
Act defines the food safety management system means the adoption of good manufacturing practices, good hygienic practices, hazard analysis, and critical control point. Basically, it is HACCP. Uh, in upcoming classes, we will elaborate you and train you कि आप HACCP कैसे कवर कर सकते हो, FSMS कैसे बनाना है, SOPs गाइडलाइन को आप कैसे implement करना है और what are the requirement और कैसे आप उसको बनाओगे. The purpose of this HACCP and Schedule 4 to assess all and conduct definition the basic FSMS प्रोग्राम जो हमारा है शेड्यूल 4 के कंप्लायंस में आता है एंड शेड्यूल 4 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अगर आप प्लांट हो या फूड फैसिलिटी में हो तो आपको शेड्यूल 4 को कंप्लायंस करना होता है. These are some basic definitions you can read or I will explain why we need. Section 16 of the FSSA holds FSSI responsible for regulating and monitoring the manufacturing process, distribution, sale, and import of food so as to ensure safe and wholesome food. Second, how? By introducing basic hygiene and safety requirement in the form of Schedule 4. Next question, what is FSSR? The Schedule 4 has been mandated for compliance by introducing it as a licensing requirement condition under the Food Safety and Standard Licensing and Registration of Business Regulation. Next, what is the means अगर हम उन चीजों को follow नहीं करते हैं जो guideline है उससे नहीं करेंगे तो what is the impact on us? So as per under FSS's licensing and registration of food business, notice मिल सकता है, rejection of application during inspection of licensing. Second, notice cancellation of license during periodic food safety audit by the license authority. Under section 56 of FSSA, penalty of up to 1 lakh for unhygienic or unsanitary processing or manufacturing of food. This may be called the penalty and other the legal action we can take for the food manufacturing facilities. So next word understanding the food safety. जो भी हम खाते हैं जो आज आप अगर मार्केट में मॉल में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे पैकेज फूड्स मार्केट में अवेलेबल है और जब से आपका कोविड आया मोस्टली लोग पैकेज और ब्रांडेड फूड की को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स. So whenever we are eating any packaged food of any brand, the first thing comes in mind is this is safe for us. So safety is the main concern when we eat any foods or any packaged food. First, understanding the food supply chain. Definition of food chain. A food supply chain logistic network or supply network is coordinated system of entities, activities, information, and resource involved in moving a product or service from supplier to customer. The entities of a supply chain consist of primary procedures, secondary production manufacturers, service provider, distributor, and retail outlets. Food supply chain activities transform raw materials and component to the finished product. The main objective is the farm to fork aspect. पहले जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स था उसमें क्या करते हैं हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तक ही कवर करते हैं बट नाउ डेज एफएसएसआई एक्सप्लोर दीज थिंग्स. अब हमारी इंपॉर्टेंट और क्राइटेरिया जब हम फार्म में प्रोसेसिंग करते हैं जब हम खेती करते हैं वहां से उन चीजों को कंट्रोल करना और आपकी प्लेट तक जाने तक उनके कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स मीन सप्लाई चेन रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग रिटेल होलसेल सारा कुछ इसके अंडर में कवर्ड आ जाता है. The best example is FOSTEC. FOSTEC is started by Government of India as per FSSI. It is the major mandate becomes the mandatory now for it is described in the basic advanced. It is a comes for catering business, supply chain, and warehousing, retails, manufacturers. Everything comes under the it. तो अब मैंडेटरी कर दिया लोगों को फॉस्टेक सर्टिफाइड होना. इवन आप अगर 25 अगर फूड हैंडलर्स हैं तो उसमें से एक का फूड सेफ्टी सुपरवाइजर ट्रेनिंग होना इज मैंडेटरी नाउडेज. द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि अवेयरनेस होगी तो लोग इन चीजों को अवॉइड करेंगे और हमें सेफ फूड मिलेगा.
Now understanding the food safety, relationship between the food quality, food health quality, and food safety trade. Food safety basics. Food is fundamental importance to life. फूड में आपका बेसिक फूड कंपोनेंट्स में आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं? Mixture of chemicals, toxins, contamination, adhesive, and others. Some key incidents from food safety farm to fork. I think it is not visible for you. वो छोटा है. मैं explain कर देता हूँ. आगे. The next question first come in mind. Why is food safety important? The burden of foodborne disease is substantial. 600 million people affected annually, जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है. ये हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है जो कि उनके साइट्स पे अवेलेबल है. As per food safety before USFDA data on foodborne incidents, ये साइट की लिंक मैंने दी हुई है. इस पे अगर आप चेक करोगे तो उसके बेसिस पे number of foodborne incidences reported 7.2 million before 2000 and number of death around 5000. number of death per million अगर हम कैलकुलेट करें तो 694 है. और after year 2010 number of foodborne incidences reported 4.8 million. number of death around 3000. These are the some data which indicates the why food safety is more important to us. These are the basic some fundamental data collected from the site for your reference. Now coming to the food safety hazards. What are the basic hazards in the food safety? There are three types of hazard. First is physical, second one is chemical, and third is microbiological. Some issue in PPT. Wrong. I think something issue in my system. Can I explain it to verbally because something there is some issue in my system, so I am able to show it through the PPT in better condition. Basically, there is a three types of hazard. One is first is physical, second one is chemical, third is biological. In the first hazard categories, the things are comes like physical hairs, but button, with any cosmetic item like thread धागा लोग पहनते हैं buttons, anything which you can see, these are called physical hazards. Second one is chemical, like pest control chemicals, even perfumes person are using, and others like your paints, cleaning equipment, these all are come under chemical hazard. Third one is biological. Biological is basic microbiological, two types of, first we whatever we can see and second whichever we cannot see. In the visible like pest, biological hazards like bee, mosquitoes, flies, these are also comes under the biological hazard. Second one is microbiological hazard like microorganism, fungus, bacteria, these all are comes under the microbiological hazards. So and the new introduced hazard is allergen. Is now allergen declaration is also the mandatory part in food safety.
नाउ अगर आप आज की डेट में देखोगे तो कोई भी लेवल पे आपको एलर्जन डिक्लेरेशन मैंडेटरी कर दिया गया है. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग विच आर एलर्जन, और सपोज आप दो तरह की प्रोडक्ट बनाते हो और किसी एक में कोई एलर्जेंस हैं और दूसरे में नहीं है, तो इट इज मैंडेटरी कि आपको वहां पे डिक्लेयर करना होगा आपके पैक पे कि कौन कौन से एलर्जन की पॉसिबल कंटामिनेशन है. So allergen is becomes a mandatory for declaration. The basic allergens are cereal containing gluten, fish, milk and milk product, nuts, peanuts, soybean. These are the common allergens. सर फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज. Something issue in this ना. Okay, मैं करता हूँ इसको. Some common allergens are milk, egg, peanuts, soya, wheat, tree nuts, fish. So one thing comes in mind, why allergen is important. This is data some simple question. जो चीज हम खा सकते हैं जरूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए. पसंद is not by choice. It is not suitable for all. For example, if someone is allergic from milk or milk product, और अगर मैं उसे कोई चीज, सपोज मैं चॉकलेट बना रहा हूँ और उसमें मिल्क कंटेंट है और मैंने उस पर डिक्लेयर नहीं किया है इट कंटेंट्स मिल्क, और वो उसको कंज्यूम करता है, देन देयर इज अ चांस ऑफ एलर्जी. एंड एलर्जी is maybe the symptoms of sneezing, vomiting, skin rashes, fever, eye irritation, and in some cases it also causes the death. So it is, people are taking it more seriously. Next, what is the allergen management for to avoid this allergen? तो जैसे आप सिंपल अगर उसमें गओगे तो जो बेसिक हमने आपको 10 एलर्जन बनाए, अगर आप एक ही लाइन पे एक ही जगह पे आप स्टोर कर रहे, आपके 20 और 30 रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इन जनरल, और उसमें से मे बी एक या दो एलर्जन, लाइक नट्स, अगर आप आलमंड है तो एलर्जन है, बट इफ यू आर मेकिंग टू वेरिएंट which are, one is with almond and second one is without almond. So if you have to declare that or the second product can also contain the allergen which is named as almond. Otherwise you have to do a hazard plan. Hazard is hazard analysis and critical control point. So first thing I will explain कि hazard को हम identify कैसे करेंगे. हमने आपको बताया कि what are the hazards. Hazards जो भी आपको, there is let's understand first thing, like example आग is a hazard, but आग तब तक हैजार्ड नहीं है जब तक कि आप उसके पास नहीं हो या अदरवाइज आप वहां पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल ना रख दो. इन सेकेंड एग्जांपल, अगर पानी है तो पानी इज अ हैजार्ड, बट वो आपके लिए तब तक हैजार्ड नहीं है जब तक आप उसमें कूद नहीं जाते, और आपको अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप उसमें गिर जाते हो तो हैजार्ड है. अगर आप पानी के साइड में खड़े हो और आप सेफ हो, देन वाटर इज नॉट अ हैजार्ड. So there is a condition called risk. What is the risk of that hazard? So we have, अब हमें पता है कि hazard क्या है, तीन टाइप के हो गए, physical, chemical, biological. Biological including pest and microbiological. And the next one is newly introduced allergen. So now we have identified the all hazards. So when अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल आता है तो उसमें सबसे पहला काम होते हैं आपके hazard analysis, which is called hazard analysis and critical control point. These are the 12 steps and 7 principles. I mean, in general, this class I am explaining in the brief. I will explain it later in every principle and what are the steps and how to conduct a hazard analysis. In general, first thing we have to do, अगर कोई material हमारे पास आता है, then we have to identify what are the hazard associated with it. There is a pest, हो सकता है उसके साथ कोई पेस्ट अंदर एंटर करे, या माइक्रोबायोलॉजिकल उसमें कोई पैथोजन हो. फिजिकल हैजार्ड, maybe there is some metal piece or particle, plastic, thread, wood, anything. This is the physical hazard. Chemical hazard, there is
अगर कोई मटेरियल हमारे पास आता है, might be material is intact but it comes in the with some hazardous chemical, or might be you have painted a wall and you keep the newly painted wall and you keep the food materials nearby, so there is a chance of contamination. Or anything you are, if you are storing a cleaning chemical like Savlon or sanitizer you are putting nearby the food product. Sanitizer is good for human, but it is not supposed to go in the food and contaminate. But if it is contaminated anyway, अगर वो product में आता है, it is a hazard. So this, now we have to identify what is the basic sources of the hazards और कहाँ कहाँ से हमारा आ सकता है. जो man से आ सकता है, material से आ सकता है, environment से आ सकता है. So these are the basic source. So then we have to introduce and identify the each and every step of the how, what are the basic hazards and what are the source, their sources. So the first thing we have to do for hazard analysis, conduct a team. Team should be, जो भी हम टीम फॉर्म करेंगे हैजार्ड एनालिसिस के लिए, वो एटलीस्ट मल्टी फंक्शनल डिपार्टमेंट से होना चाहिए. इट डजंट मीन कि क्वालिटी पर्सन जा करके, बिकॉज हैजप इज कम्स अंडर क्वालिटी टू, इट डजंट मीन कि सिर्फ क्वालिटी का पर्सन होगा वो पूरी हैजार्ड एनालिसिस कर सकता है. नो, इट इज नॉट ट्रू. बिकॉज अगर सिर्फ क्वालिटी पर्सन हैजार्ड एनालिसिस करेगा तो ही विल नॉट एड्रेस द मेंटेनेंस पॉइंट और प्रोडक्शन पॉइंट और एनी अदर पॉइंट्स. So HACCP team should conduct each and every department. Like there should be a person from maintenance, production, quality, and other further department. वो इसलिए क्योंकि वो अच्छे तरीके से उन चीजों को कैप्चर कर पाएंगे. So first you have to form a team. एक HACCP team बनेगी. There should be a leader who will be responsible for each and everything, hazard identification and everything. Then they will do brainstorming and identify the risk. They will withdraw a process flow diagram. Process flow will include each and every step whichever is performing in shop floor. सारी चीजों का सबसे पहले आपने एक टीम बना ली. अब आपको सबसे पहले प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना है कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से आ रही हैं और कौन कौन से प्रोसेसिंग स्टेप है टिल द रॉ मटेरियल रिसीव करने से लेकर के फाइनल डिस्पैच करने तक. अब हमने उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को बना लिया. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम जा करके सारी टीम पूरी शॉप फ्लोर पे प्रोसेस को फिर से वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया है उसमें कहीं कोई गैप तो नहीं है. नाउ यू हैव, आपने फ्लो डायग्राम बना लिया और सारी चीजें आपको पता है कि प्रोसेस फ्लो क्या है. अब हम ईच स्टेप्स में जो भी प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने बनाया है हर स्टेप में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड एलर्जन, ये सारे हैजार्ड को खोजेंगे कि वहां पे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं. अगर वी विल आल्सो कंसीडर द लाइट, अगर वहां पे लाइट लगी तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए कुछ टाइम बाद. तो वहां पे लाइट जो भी लगी होगी वो ग्लास की कवरिंग नहीं होनी चाहिए या बल्ब नहीं होगी. देयर शुड बी अ प्लास्टिक और ये लेयर कि अगर वो बाय मिस्टेक वो टूटता भी है तो भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में जा जाए. नेक्स्ट आपकी सर हमें स्लाइड नंबर 27 पे ही रुका हुआ है बहुत देर से. actually there is some problem in the system, so sorry for that. I will try कि मतलब next time ये problem ना आए. पता नहीं कुंभ के चक्कर में एक्चुअली काफी जगह इन लोगों ने कुछ कर रखा है जिसकी वजह से नेटवर्क इशू है. Sorry for that. I will explain. I will try to cover these things in upcoming classes also, or I will give you some extra time. So next I will comes to the hazards. So yeah, now we have identified each and every hazard. Please ignore the slide. अगर आप स्लाइड को करोगे तो शायद वो प्रॉपर चलेगा नहीं और आई विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. सॉरी फॉर दैट.
I will share the PPT separately. Okay, thank you, sir. So now we have identified the each and every steps and हमने hazard खोज लिया कि इसमें क्या क्या hazard हो सकता है. So for example, अगर हम किसी चीज को boil कर रहे हैं, if cooking is a step and we are heating, so there is a hazard. What are the hazard? हो सकता है physical hazard कि आपकी कंटेनर्स क्लीन ना हो, या कंटेनर्स आपने जो क्लीन की उसमें जो केमिकल आप यूज कर रहे हो उसका रेसिड्यू रह जाता हो, तो उस और क्या हो सकता है जो लोग कपड़े पहन के जा रहे हैं उसमें बटन्स हो, या जो लेडीज वर्कर्स हैं उन्होंने पूरी मेकअप कर रखी हो या बैंगल्स डाल रखे हो, बिंदी लगाया हो, देयर इज अ पॉसिबल चांस. या वो जो पर्सन हमारे प्रोसेसिंग एरिया में जा रहे हैं वो हाई परफ्यूम यूज कर रहे हैं, तो देयर इज अ रिस्क कि आपके परफ्यूम की स्मेल आपके प्रोडक्ट में जा सकती है. तो हमने ये सारे हैजार्ड्स जो भी हैं फिजिकल केमिकल्स आपको बता दिए. क्लीनिंग केमिकल्स जा सकते हैं, हो सकता है आपके प्रीवियस आप जो बकेट यूज कर रहे हो या कंटेनर यूज कर रहे हो उसमें प्रीवियसली कोई केमिकल रहा हो जो कि मे बी माइट बी हैजार्डस हो हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए. This is called contamination. There is two things I want to introduce. First is contamination and second is one is cross contamination. तो फर्स्ट कंटामिनेशन क्या है? अगर आपकी सपोज कोई भी चीज है उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाता है, लाइक दाल है उसमें अगर स्टोन आ जाता है, दिस टाइप ऑफ कॉल्ड कंटामिनेशन. सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन. क्रॉस कंटामिनेशन क्या है? सपोज आपने एक वेसल लिया उसमें कुछ कुक किया एंड सेकेंड टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनाया और उसका कुछ रेसिड्यू आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो गया किसी भी प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन. तो देयर इज अ रिस्क ऑफ हैजार्ड एज कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन. नेक्स्ट फिजिकल हैजार्ड्स में आपके, तो ओवरऑल हमें ये है कि सारे हैजार्ड हमने आइडेंटिफाई करना है जहां जहां से आ सकते हैं. फिजिकल हो सकता है स्टोरेज की वजह से आ सकते हो, वाटर सोर्सेज से आ सकते हैं, पर्सन से आ सकते हैं, इन्वायरमेंट से आ सकते हैं. अगर सपोज आपका एयर के इन्वायरमेंट से आ सकते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? हम आपको धीरे धीरे ये बताएंगे कि आपको हैजार्ड आपने अगर खोज लिए तो उसको कंट्रोल के लिए कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे. सो फर्स्ट थिंग, सबसे ज्यादा जो आपको कंट्रोल मेजर्स में हेल्प करेगा सबसे पहले होता है PRP. सर स्लाइड्स फिर से रुक गई सर, कोई नहीं, फुल स्क्रीन हटा दीजिए ताकि हमें दिख जाए. कुछ करना पड़ेगा. Can I explain is accepting the slide? Hello. Yes, you can skip this full screen. At least previously we could see moving cursor. In this one we can't see, it's all frozen. Yes. PPT is there, but something is wrong with it. Actually, I have connected it from my mobile, so it is not working properly. Hello. Okay. Now it's Please visible, sir. ignore. Okay. So I am talking about the hazards. So we have identified the hazards, and now we have to reduce the maximum. अब हम आपने क्या किया, आपने सारी जितनी प्रॉब्लम्स थी उन सबको आइडेंटिफाई कर दिया आपने और आपकी टीम ने, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग. अब आपको कंट्रोल करना है कि उन हैजार्ड्स को आपको पता चल जाए कि क्या क्या रिस्क हो सकता है. हैजार्ड इज डायरेक्टली रिस्क होगा, हैजार्ड है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हैजार्ड्स के साथ रिस्क कितना है. जस्ट लाइक मैंने आपको बताया अगर आग है दैट इज हैजार्ड, बट वहां पे अगर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है देन देयर इज रिस्क. तो देयर इज रिस्क कि वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है, बट अगर वहां पे रिस्क नहीं है तो हम उन चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे. क्लियर? अगर वहां पे
सपोज अगर कोई चीज को आप रखते हो तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ आने के चांसेस हैं, बट अगर आप ज्यादा टाइम तक नहीं रखते हो तो उसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध रखते हो, अगर आप उसको टाइमली कंज्यूम करते हो या प्रिजर्व करके रखते हो तो वो फटेगा नहीं, बट आप उसको अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखोगे, बॉयल नहीं करोगे, ऐसे नॉर्मल छोड़ दोगे तो वो फट जाते हैं। So there is the risk and the hazard. You have to understand the difference and what is the requirement. So now you have to identify the hazard. अब आपको ये देखना है कि वहां पे रिस्क किस कौन से हैजार्ड के हैं, कि कौन कौन से हैजार्ड आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट आ सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज प्री रिक्विजिट प्रोग्राम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, PRP. In short we are telling is PRP. तीन चीजें होती हैं, एक होती है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम विच इज PRP, सेकेंड इज ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम दैट इज OPRP, थर्ड वन इज CCP which is critical control point. What is the basic difference? PRP में आपका good manufacturing practices, good hygiene practices, like आपकी ड्रेस कोड, जो आप यूनिफॉर्म पहनोगे उसमें बटन्स नहीं होने चाहिए, आपको ज्वेलरी पॉलिसी, कोई भी ज्वेलरी पहन के आप फूड प्रेमिसेस में काम नहीं कर सकते, PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, हेयर नेट, एप्रन, ये आपको वेयर करना है। ये सारी चीजें आपकी प्री रिक्विजिट प्रोग्राम में के अंडर में आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ जो हैजार्ड्स होते हैं उसके लिए आपको कुछ एडिशनल स्टेप नहीं लेना पड़ता है, वो सारे आपके PRP के अंडर में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। देयर आर सम स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर, कहीं पे आपको कोई चीजों को रिस्क को कम करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन। कुछ प्रोडक्ट को हम फिल्टर करते हैं ताकि जो फिजिकल हैजार्ड से बड़े पार्टिकल्स है वो ना आ पाए। दिस इज कॉल्ड, यू कैन कंसीडर ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम। Why it is OPRP? Because this is the operational requirement कि हम उसको फिल्टर करें। सिंपली आपका कुछ प्रोसेस में हम रोस्टिंग करते हैं या हीटिंग करते हैं, दिस इज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट to minimize the biological load. So we are doing heating or any other process. These are called operational prerequisite program. Third one is critical control point. कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, मोस्ट ऑफ जो हैजार्ड आपने खोजे उसमें से मैक्सिमम हैजार्ड आपके प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के अंडर में कवर हो जाएंगे। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम में जो आपके ना रूटीन के आपकी SOPs है, या जैसे ड्रेस हो गया, आपको जो चीजें करनी है बेसिक चीजों से जो कवर हो जा रहे हैं, तो वहां पे रिस्क खत्म हो जाएगी। तो देर वहां पे उन हैजार्ड्स के लिए रिस्क नहीं होगा आपके फूड प्रोडक्ट को डैमेज करने के लिए, कंटामिनेट करने के लिए। नेक्स्ट जो बचती है उससे वो आपके ऑपरेशनल जो प्री रिक्विजिट होंगे उसकी वजह से कंट्रोल होगा, बट स्टिल देयर शुड बी सम पॉइंट्स और कंट्रोल मेजर्स विच इज रिक्वायर्ड, लाइक मेटल। अगर कोई मेटल पीस है तो हो सकता है कि अगर आप रोस्ट कर रहे हो तो भी वो वहां से नहीं हटेगा, देयर इज अ रिस्क, क्योंकि वो रोस्टिंग में मेटल पीस एज इट इज रह जाएगा। तो हाउ और हाउ टू रिमूव द लास्ट एंड द क्रिटिकल हैजार्ड्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट जो PRP OPRP दोनों से कवर नहीं होता, उसके लिए होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट जिसके बाद आप प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में जाएगा और आपका उस प्रोडक्ट के हैजार्ड कंट्रोल पे कोई एडिशनल कोई कमांड नहीं रहेगा। तो दैट इज CCP। सम एग्जांपल्स, अगर आपका मेटल डिटेक्टर आपने लगाया है, मेटल डिटेक्टर इज द फाइनल कंट्रोल पॉइंट, आपकी प्रोडक्ट उसके आगे जाएगी तो आपके पास फिर कोई कंट्रोल नहीं, इट शुड बी पैक्ड इन द फाइनल पैक एंड डायरेक्टली गो टू द मार्केट। तो लास्ट पॉइंट जो जहां पे आप मेटल को डिटेक्ट कर सकते हो वो आपको मेटल डिटेक्टर है। सो इट शुड बी अ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सो यू हैव टू फाइनलाइज कि उसकी अब ये है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा पॉइंट आपका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है और कौन सा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, कौन सा प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम से होगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला जिसमें हम रिस्क और सिग्निफिकेंस को मल्टीप्लाई करके एक नंबर्स लाते हैं। आई थिंक सम सिस्टम की वजह से चल ही नहीं पा रहा है। सर आगे कर दीजिए स्लाइड। माइट भी मैं कुछ और दिखा पाऊँ।
tell you something that you can able to understand. श्योर कि नेटवर्क प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम्स ना है टेक्निकल नेक्स्ट टाइम से. वी आर सीइंग स्लाइड 21 सर. वो जो आप अभी करंट पढ़ा रहे हैं प्लीज वो दिखा दीजिए. ये वाली ओके. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें. अदरवाइज मैंने काफी अच्छा तो सोचा था कि आई थिंक आई विल फिनिश दिस पोर्शन. या एलर्जन तो हो गया अभी यार. प्रोसेस कंट्रोल आई कैन एक्सप्लेन जो भी आता है मैंने. फॉर्मेशन कंट्रोल विल एक्सप्लेन पर आज का जो टाइम भी कम बचा है. I will try to manage it in available classes. I will brief about the formulation control. Erosion हमने cover कर लिया था, hazard cover कर दिया था. Hazard hazard बनाना मैं आपको next class में आपको explain करूँगा कैसे कैसे हम step और उसकी scoring करते हैं, कैसे हम significance find out करते हैं, किसी चीज के risk और उनके बीच का significance कैसे निकाला जाए, कैसे scoring करेंगे और कैसे उसको CCP और control measure decide करेंगे and then complete analysis. I will explain the formulation control. Suppose आपके पास एक process आपने finalize कर दिया किसी चीज को भी, then what are the your controls on the process? Like basic controls are आपकी sequencing. Suppose आपको कोई चीज step by step डालनी है. Like for example, you are preparing a tea and you have to first add sugar, then you have to add tea powder or whatever. बट अगर वहां पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होगा तो हो सकता है मिस हैंडलिंग या किसी वजह से जो इंग्रेडिएंट आपको लास्ट में डालना था वो आपको पहले डल जाए. तो व्हाट आर द इम्पैक्ट अगर आपके प्रोसेस कंट्रोल्स नहीं है और अगर आपके इंग्रेडिएंट मिक्सअप हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो देयर शुड बी अ मेजर चेंज इन द टेस्ट प्रोफाइल and it should be a rework and completely lost. So it is required to control over the process. ये किसी भी तरह का हो सकता है लाइक आपकी एसओपी के थ्रू या फिर ऑटोमेशन के थ्रू. लाइक सम कंपनीज क्या करती हैं कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस है. इट इज वेल डिफाइंड कि कब क्या चीज ऑटो ऐड ऑन होना है और कितनी क्वांटिटी में ऐड होना है. तो फर्स्ट प्रोसेस कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट. सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट कि आपको कब क्या कितनी क्वांटिटी में डालना है इन फूड प्रोसेसिंग. दिस इज आल्सो an important part under the process control. Next, scooping and bins, label control and rework. I will explain label control. अगर आपके सपोज आपने कोई भी चीज बनाया है तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि वो क्या है. तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें हम लेबलिंग करें. लेबलिंग में आपके हर लेबलिंग भी जो भी हम यूज करते हैं वो कलर बेस्ड होना चाहिए ताकि इजीली, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मैन पावर होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती उस पर लिखा क्या है. क्योंकि आपकी जब प्लांट अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जाओगे तो वहाँ पे सारे बंदे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनरल वर्कर होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं. दे आर समवन मे बी नॉट एबल टू रीड कि उस पे क्या लिखा है या उसको समझ पाए कि उस पे क्या लिखा है. सो देयर इज अ कलर कोडिंग इन ईच एंड एवरीथिंग. और लेबल्स जो भी हम लगाते हैं वो कलर कोडेड होता है. अगर वो ग्रीन है
तो हमें पता है कि वो इट इज अप्रूव, रेड है तो इट मीन वो स्क्रैप है. So in such way we will define the each and everything. In erosion control also हम क्या करते हैं, जैसे डब्बे हो गए या स्कूप हो गया या क्लीनिंग टूल्स हो गए. क्लीनिंग टूल्स आर द बेस्ट एग्जांपल. अगर आपके पास क्लीनिंग टूल्स के लिए सपोज ब्रश है या डस्ट पैन है या एनीथिंग क्लीनिंग टूल्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टूल्स को हमको मशीन पे यूज करना है, कौन सा फ्लोर पे यूज करना है और कौन सा अदर चीजों में यूज करना है. अगर वहां पे कोई लेबल आइडेंटिफिकेशन या कलर कोडिंग नहीं होगा, तो देयर इज अ चांस कि अगर दोनों आपको मशीन के ब्रश और फ्लोर क्लीनिंग का ब्रश एक ही कलर का है, तो वहां पे हो सकता है कि वो गलती से ना चाहते हुए भी वही ब्रश फ्लोर क्लीनिंग के ब्रश को लेकर के वो मशीन पे यूज कर ले और वापस से उसको फ्लोर पे कर ले. तो देयर इज अ रिस्क कि वहां पे जब वही इक्विपमेंट या क्लीनिंग टूल से अगर आपको मशीन या फूड प्रोसेसिंग कॉन्टेक्ट सरफेस को क्लीन करता है, तो वहां पे रिस्क है कि आपके हैजार्ड्स, फिजिकल इवन माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड वहां पे एड ऑन हो सकते हैं. सो देयर इज अ लेबलिंग सिस्टम इन इंडस्ट्री एंड कलर कोडिंग. तो लोग क्या करते हैं इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी चीज है उनको कलर डिफाइन कर देते हैं. अगर फ्लोर के लिए होगा तो हमने रेड कलर डिफाइन कर दिया और जो मशीन के लिए होगा उसके लिए ग्रीन कलर के टूल्स डिफाइन कर दिए. तो एवरी पीपल नो, उनको पढ़ना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली वो देख के पहचान सकते हैं कि इसको मशीन पे यूज करना है और इसको फ्लोर पे यूज करना है. तो लेबलिंग इज द इम्पोर्टेंट. उन चीजों को लेबल करते हैं. नेक्स्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में रिवर्क. इन एनी प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री और एनीवेयर रिवर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है. आपका कोई भी प्रोसेस में कितना भी बेटर इक्विपमेंट हो, एटलीस्ट 4%, 10% या 1% रिवर्क जनरेट होते ही हैं. रिवर्क इज नथिंग एल्स, आपको जो फूड प्रोडक्ट है उसका बाई प्रोडक्ट जो कि आप डायरेक्टली एज अ मार्केट में नहीं भेज सकते ड्यू टू सम माइनर और मेजर डिफेक्ट. लाइक अगर उसकी शेप प्रॉपर नहीं आई, यू आर प्रोड्यूसिंग अ बिस्किट एंड उसकी शेप प्रॉपर नहीं आई, या कैश्यू हल थोड़ा कम परसेंटेज हो गया या नेट वेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो यू कैन नॉट सेंड इट टू मार्केट बिकॉज दिस शुड बी लीगल कॉम्प्लायंस, नॉन कॉम्प्लायंस. तो उन प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली अब स्क्रैप तो करोगे नहीं. हो सकता है क्योंकि अब डेली अगर आप 1 टन प्रोडक्शन कर रहे हो अगर और आपकी डेली की 100 kgs आपका रिवर्क निकल रहा है, तो डायरेक्ट और वो एडिबल फॉर्म में है, बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक रिजेक्शन, मशीन इक्विपमेंट या पैकिंग इशू, आप उसको एज इट इज फॉर्म में मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते. तो उन चीजों को हम रिवर्क बोलते हैं. वो प्रोडक्ट बेस्ट है, प्रॉपर है, बट ड्यू टू सम रीजन लाइक पैकेजिंग डिफेक्ट और मोल्डिंग या प्रोसेसिंग डिफेक्ट हम उसको एज इट इज मार्केट में सेल नहीं कर सकते. तो उन चीजों को हम फिर एज अ रिवर्क यूज करते हैं. इट इज एज अ बाई प्रोडक्ट वी विल एड एनी defined procedures in defined percentage in the food main ingredient and then finally pack and send to the market. तो सबसे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब रिवर्क किस टाइप का है, what are the source, what is the risk associated with it. So we have to control over the rework, labor control. Next, cleaning of equipment. Equipment cleaning is the important part because if your equipment, whatever you are using in food processing is not clean, there is a major risk associated of contamination of product. Packaging management. Packaging management provide proper information about the product and label. आप लोगों ने आई थिंक लेबल या फूड प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हो तो वो देखा होगा उस पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं. व्हाट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन which is required to note mention on the label, like nutritional information, warning, warning in allergen, maybe ingredient list, because what you are using as an ingredient to manufacture it. Next is instruction for use. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूस की बोतल या पैक्स देखोगे तो उस पे यूजेस की प्रोसीजर लिखा होता है. एग्जाम्पल लाइक शेक वेल बिफोर यूज और यूज विद इन 2 days आफ्टर ओपनिंग, इस टाइप के लिखे होते हैं. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट
सजेस्टेड बाय गाइडलाइन एंड इन गवर्नमेंट कि आपको वो सारी चीजें मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो तो उसके ऊपर एक बैच कोड होता है, जस्ट 5 to 6 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, और इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। वो एक स्पेसिफिक कोड जनरेट करती है उस बैच का, उस प्रोडक्ट का, जिससे कि वो ट्रैक कर पाए कि उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ या कौन सा उसमें आपने लाइन पर प्रोसेसिंग हुई, किस डेट में बना। ये सारी चीजें उस बैच कोड जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक आपका गाड़ी का नंबर, उस नंबर से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसका है, बेसिक डिटेल्स क्या थे, इंग्रेडिएंट क्या थे, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट था। ईच एंड एवरीथिंग कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द बैच नंबर। डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर डेट, वेज और नॉन वेज लोगो, FSSI लाइसेंस। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पैक करते हो तो उसमें मैंडेटरी होता है कि ये चीजों जो भी आप लिखते हो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए और किस साइज में होना चाहिए। सपोज आपने एक 100 ग्राम का किसी चीज का पैक लिया और उसमें हमने कुछ ऐसे लेटर में लिख दिए जो कि रीडेबल ना हो, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको जो भी लेवल पे इंफॉर्मेशन लिखोगे वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि वो रीडेबल हो, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज और बोथ। अगर आप लोकल लैंग्वेज लिखते हो तो एक दो लैंग्वेज में लिखना मैंडेटरी है। यू कैन राइट ऑन लोकल लैंग्वेज ऑल्सो, बट देयर शुड बी वन अनदर लैंग्वेज। सो कुछ चीजों में आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी में या किसी एक लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो आपको और जो भी लिखा होना चाहिए वो विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी फाइनलाइज फॉन्ट साइज, कि कितने फॉन्ट में लिखा होना चाहिए और कितनी गैप्स होने चाहिए। आपकी जो भी लेटर की हाइट होगी लिखी हुई बैच की या MRP की, वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लेबलिंग। तो अगर हम कोई भी चीज ऐसी उसमें डालते हैं और वो लेबल में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेबल में नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉफी पाउडर बनाते हो उसमें चिकड़ी ऐड करते हैं एंड वी आर नॉट मेंशनिंग इट इन द लेबल, देन इट्स द लीगल ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन ऑन दिस। So I think we can conclude this one, and I will try to make some better and resolve the issue कि हम इसको नेटवर्क इशू ना आ पाए नेक्स्ट क्लास में। हेलो FTC, हेलो। Okay, sir. Okay, sir. फिर कभी कवर कर सकते हैं क्या? आई विल डिस्कस विद FTC की मतलब जो चीजें हम आज प्रॉपर नहीं कर पाए, माइट बी इन अपकमिंग डेज एक्स्ट्रा टाइम देके इन चीजों को कवर कर पाए और बेटर वे में दे पाए। हेलो, ठीक है सर। एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे ये मिस लेबलिंग होता हो या एलर्जन डिक्लेरेशन नहीं हो लेबल पे, तो उसका कुछ स्पेसिफिक पेनल्टी है क्या FSSAI के रेगुलेशंस के इस पे? अभी पेनाल्टी डिसाइड तो नहीं किया है, अभी एज अ ऑप्शनल डाला हुआ है, बट धीरे धीरे उन चीजों को वो मैंडेटरी कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ जो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो देखोगे तो उन चीजों को डिक्लेयर करते हैं। अभी एज अ पेनाल्टी नहीं स्टार्ट किया है कि आपको पेनाल्टी लगेगा, बट धीरे धीरे वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने एलर्जन लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है कि एलर्जन मैंडेटरी है डिक्लेयर करना, और धीरे धीरे ये मैंडेटरी हो जाएगा पेनाल्टी वाइज। अभी उतना FSSAI अगर आप देखोगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की तरह उतनी उस लेवल पे नहीं है जैसे अब मेडिसिन में है, बट धीरे धीरे वो और स्ट्रिक्ट हो रही है, जितने भी रिविजन आ रहे हैं तो उस पे अब डेफिनेटली दे आर वर्किंग। ओके सर। इन फ्यूचर यू विल फाइंड कि देयर इज अ पेनल्टी आल्सो। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जैसे अभी रिसेंटली वो देयर वाज सम चेंजेस विद द वेज एंड द नॉन वेज लोगो, मतलब नॉन वेज लोगो में दे हैड मेड इट इनटू अ ट्रायंगल शेप ब्राउन कलर का। सो इफ यू कैन से अ फ्यू पॉइंट्स या आप बता सकते हैं इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड। हाँ, उसमें क्या हुआ था कि ड्यू टू गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, कुछ कंप्लेंट्स आई, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस या
आइडेंटिफाई करने में इशू होता है, या कुछ लोग क्या करते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो कलर की डार्कनेस या कॉन्ट्रास्ट रखते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ग्रीन रखना है, बट वो प्रिंटिंग इस टाइप से हो जाती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वो वेज है या नॉन वेज है। और बेसिकली जो कलर ब्लाइंडनेस है कुछ लोगों को, या तो फिर जो ओल्ड एज है, कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि वेज है या नॉन वेज है। तो गवर्नमेंट ने वो डिसाइड किया कलर डिफरेंशिएशन होता है ना, लाइक वेज के लिए ग्रीन है और नॉन वेज के लिए ब्राउन हाँ, सर्कल था। वही था, जो कलर में डिफरेंस था, ओके लोगो सेम टाइप का था। ओके अगर आप पुराने वाले वेज लोगोस को देखोगे तो स्क्वायर बॉक्स के अंदर डॉट। हाँ, स्क्वायर बॉक्स के अंदर डॉट टाइप का, तो बट वो कलर डिफरेंशिएशन था, ये ग्रीन और ये ब्राउन का। सो देन वी दे हैव चेंज कि उसको ट्रायंगल शेप में कर दे, क्योंकि शेप चेंज होगा तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इवन वो भी जिनको कलर ब्लाइंडनेस या अदर इशू। मेन तो ये शेप कॉन्सेप्ट किसका चेंज हुआ है अब? नॉन वेज वाले का हूँ मैं। ओके, कलर वही है, रेड। कलर वही है, वो चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गया है। ओके, नाउ इट्स ट्रायंगल हाँ विद अ डॉट। रिसेंटली हाँ कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग वो कलर ऐसे चेंज किया हुआ, क्योंकि दिख नहीं रहा है मार्केट में ऐसा कुछ हाँ, पैकेज पे। अभी आ जाएगा आई थिंक, अभी गाइडलाइन में ही इम्प्लीमेंटेशन आया है, न्यूज में आया था, बट अभी धीरे धीरे अभी आपको मार्केट में के प्रोडक्ट्स में भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी अभी अब प्रोडक्ट होता है सेम डे मार्केट में नहीं जाता, तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि सप्लाई चेन आज अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो आई थिंक वो मार्केट में 1 महीना लग ही जाता है प्रोडक्ट पहुंचने में, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली इट विल कम्प्लीटली चेंज नाउ, ये चीजें ओके बदल जाएंगी। एनीथिंग थैंक यू। एल्स? ओके, sorry for the interruption, I will take care for future. Okay, bye, good night. Okay, sir. Thank you.